Okay, good morning. So today we are going to learn about your favorite chapter, reproduction in lower and higher animal. So in the first case we are going to discuss the reproduction in lower organism, and second case we are going to talk about what higher organism, right? That is human being. So what is reproduction? Reproduction is formation of young one, okay, which exactly look like parents. Yes or no? In case of the reproduction, there will be production of gametes by the parent. These gametes are going to fuse, and after fusion of the gamete there will be fertilization. After fertilization, zygote is formed, and that zygote is going to give rise to the young one. Okay, and that is called as what? Reproduction. Okay, now reproduction is responsible for inheritance of character. That means that character can be passed from one generation to another generation, right? So in case of reproduction in higher organism, okay, what we are going to discuss is, suppose there are two type of reproduction. Okay, what are the two type of reproduction? One is called as asexual, another is called as what? Sexual. A means without, so whenever you will come across a word that is called as a, right? So that meaning of the a is without. You can see this is a matlab without, right? So this is without sexual, that means without formation of gametes. Okay, and this is called as what? Asexual reproduction. Here the gametes are not involved. Okay, gametes are not involved. Another is called a sexual reproduction, where the gametes are involved, right? Now what is happening in case of the asexual reproduction? Asexual reproduction may always it is uniparental, matlab only one parent is involved. Uniparental, one parent is involved. There is no meiosis. Okay, there is without meiosis. What is meiosis? In case of the meiosis, one cell is going to form four cell. Can you remember meiosis may, suppose if this is a cell, this cell is having total 23 chromosome, but that cell will arise from another cell which is having 46 chromosome. Am I correct? Okay, so this will be meiosis 1. Now this will further divided into two cell. Are you getting this? So here chromosome number will remain as it is, 23, 23, 23. Are you getting this? So you can see the number of chromosome is reduced. So meiosis में एक cell है. This is going to form how many cell? 4 cell. Okay, so there is no meiosis. Okay, but there can be mitosis. What is mitosis? 46 chromosome will remain 46 even after cell division. So this is referred as mitosis. Are you getting? This is referred as meiosis. See? Okay, meiosis में एक का चार, माइटोसिस में एक का दो. माइटोसिस बोलो एक का चार एंड एक का मियोसिस एक का चार. माइटोसिस याद रहेगा कि नहीं? यस, बोलो एक का चार और एक का चार बोलो. तो अभी आप क्या ब्लैक में टिकट बेच सकते हैं थिएटर के बाहर. हाँ, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? द मियोसिस एंड माइटोसिस. तो यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा तो क्या होगा? देयर विल बी ओनली माइटोसिस. ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, मतलब गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा कि नहीं? तो इट इज कॉल्ड एज ए गैमोजेनी. क्या बोलेगा उसको? ए गैमोजेनी. लिखा है यहाँ पे. इट इज यूनिपेरेंटल, नो मियोसिस, इट इज फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिज्म. Progeny, what is progeny? The young one, next generation. और daughter cells are genetically identical. क्यों? Because यही सेल से डिवाइड होगा कि नहीं? तो क्रोमोसोम नंबर उतना रहेगा, वेरिएशन नहीं मिलेगा, and there is no formation of gametes. So it is called as agamogeny. A means without, gamogeny, gamo मतलब gametes, geny मतलब generation और genesis, right? तो यहाँ पे क्या है? It is a quick method. Quick method क्यों बोलना है? Because it is going to take place very quickly. Okay,
Now it is the example of agamogeny. A means without. Okay, quick method है कि नहीं लिखा है यहाँ पे quick method and uniparental. So basically what is reproduction? It is defined as a biological process for the formation of new life from the pre-existing form. उसमें दो टाइप है, sexual, asexual. So these are the characteristic of asexual. क्या क्या है? Common method है lower organism, uniparental, that means only one parent is involved. Second is there is no meiosis, that means there will be mitosis, progeny or daughter cell. Okay, progeny or daughter cell, they are genetically identical. Daughter cell मतलब next cell, right? Okay, agamogeny is without formation of gamete. It is quick method and there is no variation. No variation, that means there is no evolution. वेरिएशन होगा तो भी इवोल्यूशन होगा, अगर वेरिएशन नहीं है तो इवोल्यूशन होगा नहीं. है ओके. तो ये क्या था? कैरेक्टरिस्टिक था. किसका कैरेक्टरिस्टिक था? एसेक्सुअल मेथड, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज गोइंग टू एग्जिबिट द asexual mode of reproduction. Okay, so you can see this. Can you see this diagram? Okay, now these diagram that will show there will be asexual reproduction in case of what? Sponge. Can you remember sponge? याद आ रहा है कि नहीं? Sponge belong to which phylum? What is the phylum? Porifera? नहीं, Porifera. Porifera नहीं? Okay, it is called as Porifera. Why it is called as Porifera? Because they are pore bearing. Okay, what are they? Pore bearing organisms. So their body has got numerous pores. Can you remember we have drawn the diagram like this? याद आ रहा है कि नहीं? So they are sedentary. What is sedentary? They are going to remain attached to the substratum, and on the body there are what? Numerous opening, right? These opening are called as ostia. Can you remember this? Okay, this is called as osculum. Osculum say water is going to go out, right? From these single small opening, water is going to enter inside. Are you getting? Now this sponge, whenever the conditions are not favorable, okay, there are certain freshwater sponge, for example, okay, called as spongilla. Can you see this spongilla? दिख रहा है फोटो? Now this spongilla, when the conditions are not favorable, it is going to form internal bud. It is going to form internal bud. That internal bud is called as gemule. What is gemule? It is nothing but internal bud, right? So this internal bud is developed when the conditions are not favorable, right? Okay, it is going to form the internal bud. अब ये internal bud क्या है? Actually it is a spherical, लेकिन अगर आपने उसका सेक्शन लिया वर्टिकल सेक्शन तो ऐसे दिखेगा. समझ रहे कि नहीं? एक्चुअली इट इज अ बॉल लाइक, लेकिन अगर मैंने उसको ऐसे वर्टिकल कट किया तो ये ऐसे दिखेगा. आर यू गेटिंग दिस? सो यू कैन सी दिस इज कॉल्ड एज कवरिंग. दिख रहा है आउटर कवरिंग. ओके, एंड इनसाइड देयर आर व्हाट सेल्स. नाउ ये आउटर कवरिंग है, इट इज एन ओपनिंग. कैन यू सी देयर इज एन ओपनिंग? ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. हम लोगों ने किया था माइक्रोपाइल प्लांट में, एनाट्रोपस ओव्यूल, नीचे की तरफ ओपनिंग, याद आ रहा है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. तो यहाँ पे भी क्या है? देयर इज एन ओपनिंग. दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. अब यहाँ पे देखो, दिस इज लेयर विच इज कवर्ड बाय amoebocytes. Okay, amoebocyte is going to form covering. Amoebocyte is going to form outer layer. Inside you can see there is a food laden cell. Food laden मतलब क्या है? जिसके अंदर फूड है. क्यों फूड है? बिकॉज कंडीशन कैसा है? अनफेवरेबल है. अनफेवरेबल कंडीशन में उसको खाना नहीं मिलेगा, तो ये कौन प्रोवाइड करेगा? आर्कियोसाइट. आर यू गेटिंग? आर्कियोसाइट इज गोइंग टू प्रोवाइड फूड व्हेन द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल. तो क्या होगा? दिस विल रिमेन एज इट इज टिल द कंडीशन बिकम फेवरेबल. जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा, दिस जेम्यूल विल कन्वर्ट इनटू स्पॉन्ज. आर यू गेटिंग? So this is going to form new individual. This is going to form new organism. Therefore, it is called as asexual method of reproduction. Understood? So it is observed in case of sponge called as spongilla and Ephidacia. Okay, there are two sponge are there, two species are there where it is observed. क्या किसमें दिखता है? Spongilla and Ephidacia.
ओके, so this is gemule formation in case of sponge. क्या क्या लिखा है देखो, gemule is an internal bud, am I correct? Form to overcome unfavorable condition, मतलब conditions are not favorable. अभी not favorable condition मतलब क्या हो सकता है, sometime temperature can be more, salinity can be ज़्यादा, salinity मतलब salt concentration बढ़ गया, desiccation हो गया मतलब dehydration. So these are what unfavorable condition, right? Now after the unfavorable condition, देखो क्या लिखा है, on return of favorable condition the form new organism and form in sponges like spongilla and Ephidacia. So these two are the name of the organism. Okay, now aggregation of dormant cell, okay, archaeocyte capable of developing new organism. मतलब ये दिख रहा है, archaeocyte दिख रहा है. Can you see these are the archaeocytes? These archaeocytes can form new organism. Are you getting? They are capable of forming new organism and they are laden with the food, right? Archaeocytes covered by the thick layer of amoebocyte. Amoebocyte is going to give them protection. समझ में आ रहा है? Easy है. So that is called as gemule formation in case of sponge. Okay. Now coming to the another type, that is called as budding in hydra. Can you see this is hydra? Okay. Now again, hydra belong to which phylum? Which phylum? बोलो. Phylum Nidaria. सुना ये word? 11th standard, बराबर कि नहीं? Nidaria, or it is also called as Coelenterata. Okay, what is another name? It is called as Coelenterata, right? So that is okay. Coelenterata is another name for Nidaria. So यहाँ पे देखो, it has got body. Normally they are remain attached to the substratum. Okay, can you see there is an opening? Okay, this is the opening called as mouth opening. It is surrounded by the tentacle. Okay, now these tentacles, they are provided with a specialized cell. याद है कि नहीं? That cells are called as stinging cells. Okay, the cells are called as stinging cells. Stinging cells क्या करेंगे? Whenever it come in contact with the prey, जब भी उसको कुछ खाना चाहिए तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आएगा तो उसको क्या करेगा? It is with the help of these tentacles, it is going to paralyze the prey. एक बार प्रे को पैरालाइज किया, उसको अंदर लेगा, डाइजेस्ट करेगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट विल बी थ्रोन फ्रॉम द सेम ओपनिंग. तो हाइड्रा के पास एक ही ओपनिंग है कि नहीं, जो सर्व करेगा माउथ एज वेल एज एनस, जिधर से खाएगा उधर से ही सब बाहर फेंकेगा. व्हाट? अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ पे अभी हाइड्रा में भी ऐसे हो सकता है कि नहीं कि कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये क्या करेगा? एट द बेस, कैन यू सी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बर्ड. दिख रहा है ये पेरेंट हाइड्रा है कि नहीं? पेरेंट हाइड्रा के बेस में, कि नहीं, बेस समझता है कि नहीं? क्या बेबी को बेस पसंद है? नहीं. ओके, दिस इज अ बेस, राइट. यहाँ पे बेस में क्या है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेबी हाइड्रा. दिख रहा है ये बेबी हाइड्रा, और ये बेबी हाइड्रा के पास क्या होगा? टेंटाकल डेवलप होगा कि नहीं? कैन यू सी दिस? एट द एंटीरियर एंड टेंटाकल्स विल बी फॉर्म. नाउ क्या होगा? जैसे बेबी हाइड्रा बढ़ेगा, इट इज गोइंग टू गेट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट. जैसे ये सेपरेट हो जाएगा, ये भी जाके किधर तो सेटल हो जाएगा एंड इट विल ग्रो एज न्यू ऑर्गेनिज्म. So budding is not only seen in case of the hydra, but it is also seen in case of certain organism. Okay, तो यहाँ पे देखो किस किस में दिखता है? एसिडियन. सुना है ये वर्ड एसिडियन? एसिडियन सुना है? ओके, हैव यू हर्ड अबाउट फाइलम और सब फाइलम कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा? सुना है ये वर्ड? 7th स्टैंडर्ड एनिमेलिया. तो ये यूरोकॉर्डेटा है सब फाइलम, उसके ऑर्गेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एसिडियन. तो दीज एसिडियन में भी क्या दिखता है? दे कैन आल्सो शो द बर्डिंग इन केस ऑफ एसिडियन. ओके, एसिडियंस आर द ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा, राइट. व्हाट इज अनदर नेम? Tunicata. Why tunicata? Because their body is covered by a tunicine. Okay, that is a compound जो क्या है? It is going to form covering around it or test around it. Are you getting this?
तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा और यूरोकॉर्डेटा। उसके अंदर क्या आएगा, एसिडियन। या व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा, यूरो मतलब टेल, नोटोकॉर्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू द विच रीजन, टेल रीजन। समझ में आया कि नहीं? ओके, क्या क्या लिखा है, द स्मॉल आउटग्रोथ प्रोड्यूस टुवर्ड द बेसल एंड ऑफ द बॉडी डेवलप एज अ बर्ड विच ग्रोज, कैन यू सी दिस, हो रहा है कि नहीं, बर्ड ग्रो हो रहा है कि नहीं। नाउ from the tentacle and development of the new individual, young hydra detach from the parent body and become independent new organism. इजी है। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, जेम्यूल इन केस ऑफ द स्पॉन्ज। सेकेंड क्या देखा हम लोगों ने, बर्डिंग इन केस ऑफ हाइड्रा, बट बर्डिंग कैन ऑल्सो सीन इन केस ऑफ एसिडियन। ओके, एसिडियन बिलोंग टू विच सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा। आर यू गेटिंग? यूरोकॉर्डेटा है, yes or no, and it is having the covering, therefore it is also called as tunicata. ठीक है। now young hydra detach ये हुआ। अभी देखो, there is one more thing that we are going to talk regarding again asexual reproduction in case of lower organism, planaria. Okay, what is planaria? Planaria is belong to which phylum, बोलो अभी। It belong to phylum Platyhelminthes. सुना ये वर्ड? Yes. Why it is called as Platyhelminthes? Platy का मतलब क्या है, flat. Okay. What is the meaning of helminth? Is worm. Alright. So they are a flat worm. Okay, this is called as planaria. Planaria is a scientific name, याद रखो। This is the genus and species are different, right? So this is a planaria. Planaria belong to which phylum? Platyhelminthes. They are flatworm. Planaria is a freshwater organism, right? But there are certain terrestrial form of the planaria, okay, which is going to form hammerhead like structure. Okay, hammer like structure, hammer पता है ना, हथौड़ा. Okay, so there are certain species of the planaria, they have the structure like this. Are you getting? So these are the land planarian which can be observed during the rainy season. Okay, so planaria belong to which phylum? Platyhelminthes. They are flatworm. Body is dorsoventrally flat, right? अभी ये प्लानेरिया को मैंने तीन पार्ट में अगर कट किया, दिख रहा है ये तीन पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट है देखो, पे अटेंशन। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज एंटीरियर पार्ट, देन देयर इज मिडल पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, बराबर कि नहीं? नाउ दिस एंटीरियर पार्ट, इट इज गोइंग टू डेवलप व्हाट, मिडल एंड पोस्टीरियर पार्ट, कैन यू सी दिस? It is going to form new planaria. Now what about this posterior part? It is going to form middle and anterior part. Can you see this? The first planaria, then you get what, second planaria. In the third case, this middle portion is going to form anterior and posterior. You will get what, third planaria. So from single planaria, you are going to get how many planaria? 3 planaria. मतलब ये क्या है, रिप्रोडक्शन हुआ कि नहीं? अगर नंबर बढ़ रहा है इंडिविजुअल का, कैसे भी हो, वो रिप्रोडक्शन ही है ना। बट यहाँ पे क्या है, गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, यूनिपेरेंटल, याद है कि नहीं? क्या क्या हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देखा था, यूनिपेरेंटल, ओनली वन पेरेंट, देयर इज माइटोसिस, क्विक मेथड, है कि नहीं? इट इज वेरिएशन इज रेयर, जैसे ये पेरेंट है वैसे ही बाकी तीनों भी दिखेंगे, तो वहाँ पे देयर इज नो वेरिएशन। आर यू गेटिंग? So always remember asexual reproduction is uniparental, मतलब जैसे उसका पेरेंट है वैसे ही दिखेगा, and it is observed only in case of animal. It is not possible in human being. It is possible only in movies. देखा तुम लोगों ने अमरेंद्र बाहुबली एंड महेंद्र बाहुबली, देखा कि नहीं? दोनों भी सेम दिखते हैं कि नहीं? सेम दिखते हैं। मतलब क्या, पहले वाले बाहुबली ने हाइड्रा जैसे बर्ड फॉर्म किया क्या? That there is no use of देवसेना, देवसेना का कुछ यूज है क्या? नहीं, देवसेना इज ओनली फॉर सेव देना, बारिश, है ना? आर यू गेटिंग? ओके, so this is not possible only in, it is not possible in human being or any other animals. Okay, it is only possible in real life, not real life.
समझ रहे कि नहीं? ऐसे बहुत सारा मूवीज है, मदर जैसी डॉटर दिखती है फॉर एग्जाम्पल, ओके, देर इज द मूवी विच इज रिलेटेड टू नागिन, ओके, वैसे उसका एक नेक्स्ट वर्जन है निगाहे, जैसे श्रीदेवी है उसकी बेटी भी श्रीदेवी है, कैसे पॉसिबल है? नहीं है कि नहीं? है ना? तो ऋषि कपूर का क्या यूज? ओके, अंडरस्टूड। रीजनरेशन है, बट रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन because that regeneration result in formation of three species or not three species, three individual. अभी देखो, this is a regeneration of new organism, but regeneration of body part is also seen in case of wall lizard. wall lizard पता है, उसका टेल ब्रेक करेगा तो टेल से थोड़ी नया लिजार्ड आता है, नहीं आता है। अरे नहीं, सिर्फ क्या हुआ, जो ब्रोकन पार्ट है वो दे कैन रीग्रो। स्टारफिश, उसका आर्म अगर ब्रेक हुआ तो इट कैन रीग्रो द न्यू आर्म, वो आर्म से नया ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा। आर यू गेटिंग? सो व्हेनेवर द सेल्फ ऑर्गन इज ब्रोकन, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोटॉमी। ऑटो मतलब क्या? सेल्फ, करेक्ट नहीं? एंड व्हाट इज टॉमी? टॉमी इज बेसिकली कट। ओके, आपको पता है टॉमी जब भी ना बहुत सारे ऑपरेशन रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिलेक्टॉमी, मतलब दे आर गोइंग टू रिमूव द टॉन्सिल। Are you getting? Okay, then there is what, there are various organs can be removed sometimes. Okay, so these are called as what? That is the terminology called as tomy, autotomy. Auto मतलब self. When they are going to break their own parts, it is called as autotomy. Easy है? Any doubt, any query? Okay, now coming to the next part. So we are going to talk about the two main phases. आपका जब भी, what is the next part? Sexual reproduction, बराबर कि नहीं? What is the sexual reproduction? When the gametes are involved, बराबर कि नहीं? हाँ, ऐसे नहीं बोलने का when the sex is involved, क्या बोलना है? When the gametes are involved, बराबर कि नहीं? गैमेट ट्रांसफर करने के लिए कॉपुलेशन करना पड़ेगा, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? जिसके लिए हम लोगों ने यही बायो लिया और ये चैप्टर सीखने के लिए, है ना? ओके, नाउ तो देयर आर टू फेज है। पहला क्या है? जुवेनाइल फेज है, अभी क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज में मेनली रिप्रेजेंट फिजिकल ग्रोथ फेज स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ, मतलब आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। जुवेनाइल फेज में देयर इज ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, है कि नहीं? वहां पे क्या नहीं है? एनिमल कैन नॉट रिप्रोड्यूस इन दिस फेज। राइट नाउ यू आर इन जुवेनाइल फेज, यस और नो? यू आर अबाउट टू स्टार्ट विच फेज? Reproductive phase. Are you getting? But your body organ is not mature, so there can be production of gamete. Okay, so every organism has got two phase. कौन सा phase? Juvenile phase and reproductive phase. Juvenile phase में क्या होगा? There will be what you can say, total physical growth can occur. Yes or no? There will be physical growth. There will be somatic growth. Okay, so you can see this animal cannot reproduce. Second क्या है? रिप्रोडक्टिव और मैच्योरिटी फेज, यहाँ पे यूजुअली आफ्टर फिजिकल ग्रोथ इज ओवर, मतलब जब भी फिजिकल ग्रोथ ओवर होगा तो क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग? फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ओके, व्हाट इज द मैरिज एज फॉर फीमेल? 18 ना, एंड व्हाट इज फॉर द मेल? 20, 21, 21. Okay, so this is after that age they can perform the marriage.